Hey, hi, this is Gautam. Welcome back. So this will be a very short video, and this video is meant specifically for budding investors and aspiring equity research analysts. Okay. So see, whenever you, let's say you as a student, if you want to enroll in a college, okay, so you would typically in your mind, you'll calculate or you'll try to get a sense of what is the ROI. आप उस कॉलेज में एडमिशन लोगे, पैसा डालोगे, तो आपको प्लेसमेंट मिलेगा. आप that's a thought process typically, right? So what's the ROI? Okay. And plus, let's say if you take up any project, take up any venture, then also you'll try to estimate ki what could be your potential return on investment. Okay, so ये ROI एक बहुत ही important concept है. So even for businesses, even for companies, they have a metric called return on capital. Okay, so in this video, we'll understand that how do investors, okay, they interpret that return on capital metric for any company that they want to invest in. In fact, if you listen to popular investors, both in India and abroad, you would see that a lot of them, they pay a lot of emphasis to the return on capital metric. Okay, let me just pull a couple of examples really quickly. So this is an article about Rakesh Jhunjhunwala, of course, a legendary investor. Okay, so you would see if I go down below. Okay, so here he's questioning. There's an instance where he's questioning the management about why the ROC was high earlier, now it has fallen down. Okay, so again, there are umpteen number of examples. So here there's an example which Porenju Veliat, again a very famous investor in India. Okay, so he's talking about the ROCE metric. Okay, so this is again one key metric that investors they track. So it's important that we understand how do you kind of interpret them. Okay, आपने स्क्रीनर में देखा होगा ये रिटर्न ऑन कैपिटल मेट्रिक. इनफैक्ट लेट मी पुल अप माय स्क्रीन एंड शो यू कहां पे देखते हो आपको. मैंने स्क्रीनर खोला है. आई जस्ट पुल्ड अप एवेन्यू सुपरमार्ट्स. ओके, इफ आई जस्ट स्क्रॉल डाउन, तो यहां पे देखोगे देयर इज अ राइट टुवर्ड्स द एंड there is a metric called ROCE, return on capital employed. Okay, so in this video we'll understand how do investors they interpret return on capital employed metric. Okay, वो हम समझेंगे. Okay, plus हम also समझेंगे कि what is the difference between or what is the subtle difference between ROIC and ROCE. Okay, see in India and also I think in the UK, investors largely look at ROCE, return on capital employed. In the US, it's ROIC, return on invested capital. दोनों largely same है, subtle difference है, वो हम बात कर लेंगे. Okay, तो anyway, तो ये second चीज हो गई. तीसरी चीज, okay, that we'll do in this video is I'll also walk you through कि what custom metrics that you can add in screener. Screener में आप कौन से वो custom metrics add कर सकते हो to further enhance your interpretation of return on capital. Okay, आपको help करेंगे वो custom metrics to further enhance your understanding of a business and the industry. Okay, so basically we'll dissect into those metrics will help you, custom metrics will help you dissect into return on capital. ठीक है, तो हम ये तीन चीजें समझेंगे in this short video. Okay, and so what I'll do is I'll play a snippet of a video that I've already recorded earlier. Okay, where I have described return on capital. ठीक है, और उसका importance and all the three things that we just spoke about. Okay, and the video that I'm going to pull is a free webinar that I did on fundamental analysis and valuation of Ganesha Ecosphere. तो उस वीडियो में से एक snippet I'm going to play. All right. Hope you guys enjoy this short video. Okay, trust me, will be very helpful for if you are starting out in the field of investing or if you are an equity research analyst aspirant. Okay, तो आपके लिए बहुत helpful होने वाला है. All right. With that said, let me play that video snippet. So let's start with this quote from Warren Buffett. So Warren Buffett साहब बोलते हैं कि a truly great business is that which has an enduring moat. Moat का मतलब competitive advantage. So any business is said to have moat that is able to deliver good returns on invested capital for a prolonged period of time. Okay? That business will be said to have moat. तो उन्होंने ये बोला है, उन्होंने ये भी बोला है कि there is no one formula that you can use to gauge moat in a business. The metric that comes closest to gauging if a business has moat is ROIC, return on capital, for non-financial companies, and for financial services, for banks, for insurance. Okay, it is return on equity. Okay. तो मतलब larger point है कि if a business is able to demonstrate a high return on invested capital over a significant period of time, then that business is able to do so because it has some competitive advantage over its competition. Okay, let's move forward. ROIC क्या होता है?
ROIC इज रिटर्न ऑन कैपिटल। ठीक है, तो आप जितना कैपिटल लगा रहे हो अपने धंधे में, बिजनेस में, हर रुपी ऑफ कैपिटल में आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हो, दैट इज अ क्रूड वे टू डिस्क्राइब रिटर्न ऑन कैपिटल। ठीक है, तो अगर सो रिटर्न ऑन कैपिटल, you could kind of break them down into two parameters. One is operating margin, okay, and the other is capital efficiency. Again, अभी समझेंगे capital efficiency क्या है। Okay? So capital efficiency uh, is measured as revenue generated per rupee invested. Okay? तो थोड़ा समझते हैं ये है क्या, क्योंकि this is important या okay, this is important. तो let's understand that. Let me and share a very quickly a different slide deck very quickly. कहाँ गया ये प्रॉफिट, where did it go? Yeah, it's here. All right. Hope my screen is visible. Is the ROIC thing visible, guys? Hopefully it is. Okay. Yeah, so as I said, breaking down ROIC into capital efficiency and operating margin tells us a lot about sector or industry characteristics. Okay. तो लेट्स थोड़ा एग्जांपल समझते हैं। ओके, तो कैपिटल एफिशिएंसी समझते हैं थोड़ा क्या है। एक रिटेलर का एग्जांपल लेते हैं एंड देन वील गो बैक टू गणेशा इकोस्फेयर। ओके, तो अगर हम रिटेलर की बात करें लाइक डीमार्ट, ओके, तो डीमार्ट का मार्जिन जो होता है ना, इट्स वेरी लो। सी एंड ऑल ऑफ दीज एसेंशियल रिटेलर्स ना, दे ऑपरेट एट रेजर थिन मार्जिन्स। ओके, तो एंड वी सॉ आरओआईसी इज अ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग मार्जिन एंड कैपिटल एफिशिएंसी। ओके, कैपिटल एफिशिएंसी क्या हो गया कि फॉर एवरी रुपी दैट यू आर पुटिंग इन योर बिजनेस, हाउ मच रेवेन्यू यू आर मेकिंग इन रिटर्न। तो ये डीमार्ट जो है, फॉर एवरी रुपी दैट दे पुट इन देयर बिजनेस, दे मेक 3 rupees एज रेवेन्यू। ओके, सो देयर कैपिटल एफिशिएंसी इज pretty robust, is pretty high, it's 3. So they are able to deliver a high ROIC of 20% because of high capital efficiency। और उनका कैपिटल एफिशिएंसी इतना हाई क्यों है? Because retail, at the end of the day, retail is a business about inventory management. How soon you are able to turn your inventory। अगर प्रोडक्ट शेल्फ में बैठा रहा, ओके, तो क्या होगा, वो वर्किंग कैपिटल ब्लॉक कर रहा है। लेकिन अगर प्रोडक्ट आपका जो शेल्फ में है वो जल्दी बेच पा रहे हो, जितनी जल्दी बेच पा रहे हो, उससे क्या होगा, आपके इन्वेंटरी टर्न्स इंक्रीज होंगे, आपका वर्किंग कैपिटल कम होगा, और उससे आपका कैपिटल एफिशिएंसी, यू बिकम मोर कैपिटल एफिशिएंट। इन्वेस्टेड कैपिटल के डिनोमिनेटर में यू हैव वर्किंग कैपिटल एज वन ऑफ द की आइटम्स, की पैरामीटर्स। तो रिटेलर लाइक डी मार्ट, दे वर्क ऑन ऑलमोस्ट जीरो वर्किंग कैपिटल। ओके, तो इसलिए बिकॉज एंड दे आर एबल टू टर्न देयर इन्वेंट्री वेरी क्विकली। तो इनका, so their high ROIC is driven by excellent inventory management which reflects in their high capital efficiency. So this is important guys to understand. I know I'm stressing on it. Okay, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक दो, और फिर then we'll move on to Ganesha। Okay? एक टेक्नोलॉजी का एग्जांपल दे देते हैं, माइक्रोसॉफ्ट और नेटफ्लिक्स। अभी हमने हाई कैपिटल एफिशिएंसी की बात करी, बट देन यू हैव कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स, टेक्नोलॉजी कंपनीज, दे आर वेरी लो कैपिटल एफिशिएंसी। मतलब if you talk about Microsoft, okay, for every dollar, for every dollar of capital that they put in their business, okay, they are getting only 90 cents back as revenue। Okay, which is a little surprising about a company like Microsoft, right? तो वो ऐसा इसलिए है because Microsoft has invested heavily in intangibles। they also bought LinkedIn, so there is a lot of goodwill in their books। तो ये इंटैंजिबल गुडविल, वर्किंग कैपिटल, ये सब जितनी चीजें हैं ना, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट्स, ये सब इन्वेस्टेड कैपिटल का पार्ट होते हैं। ओके, सो दैट्स व्हाई because of the high investments they have done, they have a very they don't have an optimal looking capital efficiency, but they more and they more than make up for it through a high operating margin, because of course they have a lot of pricing power। माइक्रोसॉफ्ट प्राइसिंग पावर बहुत है, तो दे आर एबल टू चार्ज देयर प्रोडक्ट्स एट अ प्रीमियम एंड दे मेक अ लॉट ऑफ ऑपरेटिंग मार्जिन। सो कॉम्बिनेशन ऑफ मार्जिन, कैपिटल एफिशिएंसी, दे आर एबल टू, बिकॉज ऑफ हाई मार्जिन, दे आर एबल टू डिलीवर हाई रिटर्न ऑन कैपिटल। तो आप देख रहे हो एक रिटेलर, उसकी हाई एफिशिएंसी है, मार्जिन कम है। टेक्नोलॉजी में कैपिटल एफिशिएंसी कम है, उसका मार्जिन ज्यादा है। तो इफ यू ब्रेक डाउन आरओआईसी इनटू दीज टू टर्म्स, यू काइंड ऑफ गेट अ सेंस ऑफ कि इंडस्ट्री कैसी है। ओके, सो दैट इज अ टेक अवे। अगेन हॉस्पिटल में मैंने सेम चीज करी है, तो उसमें अभी घुसते नहीं है। तो आप ही किसी भी इंडस्ट्री के लिए कर सकते हो एंड यू विल अप्रिशिएट कि वो इंडस्ट्री का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ओके, so this is the last part of this short video। Okay, so now let me demonstrate ki how you can add a couple of custom ratios in Screener to enhance your understanding and interpretation of return on capital metric। Okay, तो आप मैं आपको दिखाता हूँ। All right, so let me go ahead and pull my screen।
All right, so I've pulled up Screener. Okay, तो Screener में Avenue Supermarts is pre-pulled. Okay, so go to edit ratios. Edit ratios में आप नीचे जाओ. Okay, and create a new ratio करो. Okay, and then you add a name called capital efficiency. अभी जो हम अभी जो the capital efficiency ratio that we discussed ना, उसका ये रेशियो नाम हो गया. शॉर्ट नेम दे दो CAPEFF, capital efficiency, and then the formula is sales divided by, क्या करोगे, टोटल असेट्स. टोटल कैपिटल जो डाल रखा है बिजनेस ने, टोटल असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, ओके, एंड माइनस कैश इक्विवेलेंट्स. तो अगर आप ये कर दोगे तो आपकी कैपिटल एफिशिएंसी आ जाएगी. ओके, सारी कंपनी से कैलकुलेट हो जाएगी. ओके, तो जब लेकिन आरओसीई, तो चलो मैं फर्क अभी बताऊंगा. अभी आरओआईसी और आरओसी में छोटा सा फर्क है फिलहाल. जस्ट गो अहेड, सो यू डू दिस, एंड देन just enter the description that this is the amount of revenue per rupee of invested capital. Okay, and then that's it, you're done. Show preview. If you do show preview तो आप देखोगे कि Avenue Supermarts that we just discussed, उसका capital efficiency is closer to 3. तो मतलब for every rupee they invest, they make around 3 rupees back as revenue. Okay, तो ये आपको capital efficiency मिल गया. Right, तो ये रेशियो सेव कर दो. Now let's add another ratio. Go to create new ratio. Okay? और जो ऑपरेटिंग मार्जिन था, बिकॉज रिटर्न ऑन कैपिटल इज अ फंक्शन ऑफ योर कैपिटल एफिशिएंसी एंड योर मार्जिन. कितनी प्रॉफिटेबिलिटी आप अपना काम कर रहे हो और कितनी एफिशिएंटली कैपिटल डिप्लॉय कर रहे हो. तो कितनी एफिशिएंटली कैपिटल डिप्लॉय कर रहे हो तो हमने डिफाइन कर दिया रेशियो. अब बात करते हैं कि कितने प्रॉफिटेबिलिटी के साथ अपना आप बिजनेस ऑपरेशंस कर रहे हो, विच इज ऑपरेटिंग मार्जिन, विच ऑफ कोर्स यू वुड ऑलरेडी नो. सो शॉर्ट नेम वुड बी, लेट्स से, एबिट. हम एबिट की बात कर रहे हैं, एबिट परसेंटेज. सो this is straightforward, EBIT divided by sales. तो ये आपका आ गया, and this is op margin. शो प्रीव्यू. तो आप देखो कि एवेन्यू सुपरमार्ट्स का ऑपरेटिंग मार्जिन इज अराउंड 6%. ओके, तो यही तो मतलब हुआ ना, 6%. ऑलराइट, जस्ट सेव दिस रेशियो and you are done. So now if you go to, let's say, if I pull up Avenue Supermarts, you would see ये दोनों आ गए, कैपिटल एफिशिएंसी एंड ऑपरेटिंग मार्जिन. इनको अगर आप अपने दिमाग में मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये क्लोजर टू अराउंड 18 होगा. क्लोजर टू 18, 6%, 6 इंटू ऑलमोस्ट 3, तो क्लोजर टू 18% है. तो आप देखोगे कि यहाँ पे आरओसीई भी क्लोजर टू 18% है, अराउंड 18% है लेटेस्ट. सो आई जस्ट हेल्प यू कि हाउ यू कैन डिकम्पोज रिटर्न कैपिटल इनटू कैपिटल एफिशिएंसी एंड ऑपरेटिंग मार्जिन. तो उससे आपको पता लगता है उस बिजनेस के बारे में. ओके, ऑलराइट. अब लास्ट चीज बात करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ROIC एंड ROCE. ओके, तो अगर मैं वापस से एडिट रेशियोज करता हूं, और वापस से इफ आई गो टू क्रिएट न्यू रेशियो, और ये कैपिटल एफिशिएंसी को अगर मैं वापस से क्लिक करता हूं, तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने इन द डिनोमिनेटर फॉर कैपिटल एफिशिएंसी आई हैव रिमूव्ड सेल, आई हैव रिमूव्ड कैश, बिकॉज कैश इज नॉन ऑपरेटिंग इन अ सेंस, राइट. तो टिपिकली ROCE जब आप कैलकुलेट करते हो, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड, देयर इन्वेस्टर्स दे डू नॉट रिमूव कैश. तो टोटल देखते हैं, टोटल असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. Okay, so if you do that, then of course the capital efficiency that you will get would be with the cash impact as well. So but typically what I prefer is cash equivalent को आप subtract कर दो. Okay, because then you get in my opinion, a better view of capital efficiency. Okay, right. So hope guys this was helpful. Hope you understood how would you go about interpreting return on capital metric. Okay, और आप कैसे उसे dissect करोगे between the two custom metrics that we spoke about. Okay, because it's going to tell you a lot about the business or the industry that you are analyzing. Okay, and so you typically got to check the longevity of the ROC metric. कितने की business, if the business is able to deliver a high ROC for a sustained period of time. High का मतलब क्या? Typically more than 14-15% ROC. If the business is able to deliver for a prolonged period of time, then it may be able to do so because it has some competitive advantage.
Okay, और अगर कभी आरओसी नीचे गिर रहा है, there may be legit reasons for that happening. So I can just very quickly just let me pull an example where you would see कि आरओसी, अरे बिजनेस अच्छा है लेकिन आरओसी तब भी नीचे गिर गया. There may be some legit reasons. So let me just pull that example and then we'll conclude the video. So the last example, the company that I've pulled is Zydus Wellness. Okay, Zydus Wellness, अगर आप देखो, if I just go down all the way down, okay, so you would see ROCE metric was very good up till 2018 और उसके बाद से 6-7%, 5-6-7% में it's ranging. Okay, so you may wonder कि what exactly happened. So you got to like understand like what is the reason behind that sharp drop. Okay, तो हुआ क्या कि इनका, if I go to the look at profitability, okay, so there was a small drop in profitability, or in fact quite a significant drop in profitability. Okay, plus, okay, अगर आप देखो in the capital efficiency suddenly went down a lot, and the reason why that happened is, if you look at the balance sheet, okay, if you look at the balance sheet, okay, ये जो assets हैं, fixed assets, 104 से they increased to 4,500 CR. Okay, and that happened because they took a bunch of goodwill on their books because they acquired, Zydus acquired Heinz India Private Limited, जो Nycil Complan वाले brands acquire किए, तो they got a lot of goodwill on their books, so that's why the capital efficiency went down. Okay, so that's the reason why आप देख रहे हो कि इनका ROCE थोड़ा optically it looks very suboptimal. Okay, and it can happen when companies do pay a lot of premium for acquisitions. Okay, so but that would be for another video. But hope guys this was helpful and you indeed learned how to interpret return on capital metric. Please feel free to reach out to me if you have any questions. And if you're a young investor or an aspiring equity research analyst and you're interested in learning the skills to thoroughly analyze, research, and value a business, then yeah, please feel free to reach out to me. All right. Thank you.